Hello dear students. Today we'll complete this chapter in this lecture only. So it's a good news for you all that we have done 2 chapters of SST, and kudos to you because in lockdown also you were so sincere, and in this time also you were studying sincerely along with me. I hope I have given my 100%, so you also have given your 110%, right? So today we'll see a little introduction of Council of Ministers. Rest, the formation and powers of Council of Ministers and everything is omitted this year from your syllabus. So only the introduction part we'll see because that is not omitted, so it may come, okay? And then we'll revise all the important articles which we had seen everywhere. वैसे तो मैंने आपको कहा ही था, you'll underline it with a crayon every time. But then also I've collected all the articles for you together. So first see Council of Ministers. I've told you already कि Article 74 में Prime Minister का भी provision मिलता है and Council of Ministers का भी. Article 74 of Constitution, you remember that table initially which I have told, मैंने आपको इनिशियली एक टेबल दिखाई थी. आई हैव शोन यू दैट टेबल. आई होप यू रिमेंबर. अंडर दैट ऐसा एक आर्टिकल है 74. दैट आर्टिकल सेज दैट देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर हेल्प एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क एंड इट विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो दिस लाइन इज व्हाट आर्टिकल 74 सेज. इसमें सब आ गया, ओके, शॉर्ट एंड स्वीट लाइन में. That there will be a council of ministers, it will be headed by prime minister, and उनका काम क्या होगा? They'll advise the president. So you all know that now at the end of the chapter, you know president is the nominal head. He always works on the advice of council of ministers and prime minister, which is a part of council of ministers, okay? So theoretically, by the Constitution of India, all powers of executive is deemed to be vested in President, and Council of Ministers headed by Prime Minister is arranged for help and advice of President. But the President is merely a constitutional head in the parliamentary system of governance adopted by Constitution. Again, you all know now, parliamentary system हमने adopt किया Constitution में ब्रिटेन से लेकर, ब्रिटेन का कॉपी किया, right? अगर हमने अमेरिका का किया होता तो आज प्रेसिडेंट ही रियल हेड होता, बट दिस इज नॉट द केस. इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन सो दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग अलोंग. नाउ रीड द लास्ट लाइन. एंड ऑल द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन रियलिटी इज वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. So this thing I have told you many a times, okay? So if a brief introduction on council of ministers is asked, you'll write this only. Okay, they'll advise, they are the real advisors, real powers are vested in council of ministers. President is just the nominal or constitutional head, मतलब उसे नाम मात्र का head बना दिया है, right? Now see, council of ministers में usually लोग confuse हो जाते हैं. You can take screenshot of this and you can write it wherever you are making notes. Whenever people say cabinet ministers, they think they are council of ministers. So it is true, but how will you understand this? Consider a big circle, okay? उस circle को आप मान लो council of ministers. अब उसके अंदर small circle होगा cabinet minister का, इधर होगा state ministers का, इधर होगा vice ministers का. So you can understand it like this. It is a big circle, council of ministers. उसमें सब आ जाते हैं, cabinet ministers, state ministers, vice ministers. स्टेट मिनिस्टर्स एंड वाइस मिनिस्टर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि जब मीटिंग हो रही होती है पॉलिसी मेकिंग की, सो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में वो मीटिंग होती है, राइट? इफ स्टेट मिनिस्टर्स एंड वाइस मिनिस्टर्स आर इन्वाइटेड, देन ऑन इन्विटेशन दे कैन टेक पार्ट इन दैट मीटिंग, अदरवाइज नॉट, ओके? दे आर जस्ट देयर टू हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर्स in lowering their burdens, okay? So now I hope you have understood. Cabinet ministers, council of ministers होते हैं. All cabinet ministers are council of ministers, but all council of ministers are not cabinet ministers, right? So you will remember this by this only.
You can take screenshot of this, you can write it, but in your mind you can make a mental image that there is a big circle which is Council of Ministers, and inside it these types of ministers are present. So you can see cabinet ministers, state ministers and vice ministers are under Council of Ministers. They all are Council of Ministers, together called Council of Ministers. This is not given in your books. Many times people get confused between cabinet ministers and Council of Ministers. So after this, I hope you'll never be confused. And if someone is confused, you will tell them that this is the case. You can pause the video, revise it 2-3 times. Now moving on, हमने सभी की इमेजेस साथ साथ देखी, स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड ऑल. कैबिनेट मिनिस्टर्स अब बहुत सारे हैं. ओके, आई कांट शो यू इमेज ऑफ एवरी पर्सन, बट हियर आई हैव कलेक्टेड स्मॉल इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स. आई थिंक यू शुड नो just for your general knowledge, not for exams. So Minister of Defense is Rajnath Singh currently. Minister of Home Affairs Amit Shah. Minister of Finance Nirmala Sitharaman. Minister of Railways Piyush Goyal. Minister of Tribal Affairs Arjun Munda. So your homework will be, you will see their images at your own, you will see them in news every time and you will recall it, and you will see more ministers, vice ministers, state ministers at your own if you are interested, and you should be interested to know all this. Okay, just theoretical knowledge will not be enough. अगर आपने पढ़ा है सब कुछ, सो यू शुड नो कौन वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में एंड कैसे आगे काम होता है. सो यू शुड नो देम. अभी जो बजट आया था, निर्मला सीतारमन वाज देयर ऑन न्यूज़. सो whenever you see news also, you should know and you should recall, yes, ma'am has taught us this in this chapter, they have these powers and everything, right? So more you will see at your own. So this was all about Council of Ministers, and it is mentioned in Article 74. You must have underlined it. Rest after that the chapter is omitted. So we have seen legislative branch, executive branch and judiciary branch of central government, that is Supreme Court, is also omitted this year, so you don't have to study. But if you have interest, again I am saying many people have interest to know more and more, so you can give it a read from your books. It's there if you have time, but before that please keep revising whatever we have already done and whatever will come in your board exams, right? Now जितने भी articles we have seen in this chapter, all those important articles, we'll revise it at a glance. Okay, then we'll complete, we can say that we have completed the chapter. So again I'm telling you, अपने book में crayon से mark तो किए ही होंगे, but it will be good if you make notes of all these in a notes copy, because in exams they'll all be together. It will be for your benefit. Okay, not have to search it everywhere, and when you'll collect it together, you'll revise it again and again, and then that's how you'll be able to remember it for a long time. Okay, this is not an end time thing to learn. So see Article 52, मैंने आपको सीक्वेंस में अरेंज किया है नंबर वाइज. ओके, चैप्टर में हैपोजेड मैनर में रैंडमली आर्टिकल्स यही वाले आए हुए थे. आई हैव अरेंज्ड इट इन सीक्वेंस. सी आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट. सो प्रेसिडेंट का मेंशन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 52. यू शुड रिमेंबर दिस. सी नेक्स्ट आर्टिकल 53, executive power of union shall be vested in president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with constitution. So this is the original language of constitution, but now you know president is the head of union, but he works on the advice of council of ministers and prime minister, right? So यहाँ पे officer subordinate to him लिखा है, that means that only. So for now, if you want, you can pause the video and copy it, or you can take screenshot and copy it in your homework. See Article 54. इस Article 54 में election of president है. So whenever question comes about election of president, you should mention this article. This will give you bonus marks. Okay.
जो भी प्रोसीजर है वो तो आप लिखेंगे ही, आर्टिकल में भी वही प्रोसीजर है. देयर इज नथिंग डिफरेंट विच योर बुक इज सेइंग देन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट्स सेम थिंग ओनली, बट प्लीज मेंशन इन ब्रैकेट और समथिंग एज पर आर्टिकल 54. सो एग्जामिनर विल हैव अ गुड इम्प्रेशन ऑन यू. सो ये मेंशन करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट. Elected members, again I am saying not nominated members, only elected members will take part of both the houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, and state legislative assemblies part लेंगी, and union territories जिसमें जिसमें legislative assemblies हैं वो part लेंगी. कौन सी union territories ऐसे हैं जिसमें विधानसभा है? दिल्ली and पुदुचेरी. So you all know this now. But again, this is just for revision according to the article. Come to Article 66. Vice President shall be elected by members of both houses of Parliament. So Vice President का ज़्यादा syllabus में इस साल है नहीं, but then too ये article आया है book में, so मैंने यहाँ पे डाल दिया है. You can make note of this. Next is Article 74. There shall be a Council of Ministers with Prime Minister as its head to aid and advise President. So Article 74 में Council of Ministers का भी provision है और Prime Minister का भी. So if anyone asks you or in quiz or something in short questions, where is the provision for Prime Minister or Council of Ministers, both are same under Article 74 of Indian Constitution. See next. Article, sorry spelling here of article is wrong, you all know, ऊपर नीचे के आप देख के करेक्ट करके उतारेंगे. Article 79. Parliament of Union consists of President and two houses known as Council of States Rajya Sabha and House of People Lok Sabha. So this is another name for Lok Sabha and Rajya Sabha. There are many other names like Common House, Lower House और Rajya Sabha का Elder House, Upper House. You all know this now. So जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब ये आर्टिकल आया था, इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 79. ओके, सो आई होप दिस वे यू आर रिवाइजिंग एंड रिकॉलिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. दैट्स व्हाई आई हैव arranged all the articles together. So it will be good if you will copy it, make notes, okay, in exams also. Before going to the exam hall you can revise it फटाफट. and उस समय जब बहुत प्रेशर होता है, यू कांट फाइंड इट, उस समय आपको लगता है हम सब भूल रहे हैं कौन से पैराग्राफ में कौन सा था. सो दैट टाइम दीज नोट्स विल हेल्प यू, राइट. नाउ सी आर्टिकल 109. मनी बिल्स कैन बी प्रपोज्ड इन लोकसभा ओनली. सो जो मनी बिल्स का प्रोविजन है वो आर्टिकल 109 में है. ये भी आपकी बुक में पैराग्राफ में दिया हुआ था एंड आई होप आपने अंडरलाइन भी किया था, बट हो सकता है आप भूल गए हो, इसीलिए यहाँ पे वापस रिवाइज करेंगे. मनी बिल से रिलेटेड और जितनी बातें थी आई होप आपको याद है. ओके, इफ नॉट प्लीज रिवाइज अगेन एंड अगेन. सी आर्टिकल 249 एंड 312. ये किससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं चिल्ड्रन? यू ऑल नो, जहाँ पे राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा. ये तो आपने होमवर्क भी किया है, सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दीज आर्टिकल्स. 249 आर्टिकल सेज दैट it empowers the Rajya Sabha to declare any matter in state list as national importance. अगर राज्यसभा ने बोल दिया तो फिर क्या होगा, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट will make laws. Okay, so only Rajya Sabha can decide that if any matter in state list is of importance, of national importance. Again, I will not tell you what union list, state list, concurrent list and residual matters are. You will revise it at your own. I have told you many a times. Article 312 empowers Rajya Sabha for creation of all India services. So ये आपने होमवर्क में भी लिखा है, जहाँ आपने लाइन्स लिखी हैं ब्रैकेट में, you always mention articles because they are mentioned in your books also. So it will give a good impression to examiner. नाउ एमरजेंसी प्रोविजंस, ये है प्रेसिडेंट के पावर्स. सो ये सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, स्टेट इमरजेंसी इन राजस्थान 4 बार लगी है अब तक, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी और भगवान करे ना ही लगे.
right? Article 368 empowers the parliament to amend the constitution. So आपने amendment का भी initially भी वो chart देखा था, again ये book में भी था, so I have put it here just for your revision, right? अमेंडमेंट में यू रिमेंबर दोनों के पावर्स इक्वल होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के. कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती. अगर राज्यसभा ना माने इट विल लैप्स देयर एंड देयर ओनली. अगेन इनिशिएशन करना पड़ेगा. जॉइंट सिटिंग अगर होती तो हो सकता है लोकसभा जीत जाती बिकॉज इट हैज़ मोर मेंबर्स देन राज्यसभा, दैट्स वाई. एंड अगर फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अमेंड करना है तो आपको स्टेट से भी परमिशन लेनी होगी. दिस वॉज ऑल अबाउट अमेंडमेंट, वी हैव ऑलरेडी सीन. जस्ट हियर यू हैव टू रिवाइज द आर्टिकल्स, बट अगेन whenever you are revising the articles you should keep in mind all those things. जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपको ये सब अपने आप याद आना चाहिए आर्टिकल देखते ही. ओके, so this was all in this chapter. We have completed very important chapter of civics, that is central government. If you have time you can give a read to state government, which is next chapter if you have time, otherwise I'll be taking it only. You'll understand many things at your own, क्योंकि सी प्रेसिडेंट की जगह वहाँ गवर्नर होता है, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर होता है, सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट होता है. So many provisions and all are, many powers and all are, you can relate and read if you have time. But before that, please revise this chapter, learn it very nicely and try to learn it in the morning time. Okay, that's all. Have a good day. Enjoy your day. Thank you.